वेलकम बैक टू कॉर्टेक्स। आज हम करने वाले हैं हेलो नोड कुबरनेट्स लैब। सो फर्स्ट क्लिक स्टार्ट लैब। After this we will open it in an incognito window. Now close the tutorial by clicking leave, and our cloud console is ready. Next, on to the task 1. We have to create node.js application for which we have to run some commands. So activate Cloud Shell by clicking on this icon. Click authorize. After it is loaded, come back here and run these commands. Then you have to press I, इससे इंसर्ट का ऑप्शन आ जाएगा, एंड देन यहाँ पे दिया गया कंटेंट हमें पेस्ट करना है। सो कॉपी दिस, कंट्रोल वी, देन हमें इसमें एग्जिट करना है सेव करके। तो फॉर सेव प्रेस एस्केप, देन एंटर कोलन, देन WQ and enter. Okay, it should not be capital, as you can see. It should be small. So WQ and click enter. It is saved. Now next, come back here onto the task 2. You have to create a Docker container image. So again, start this by using this command. Docker file is started. Now you have to start the editor using I and then add this content. After clicking I, the insert has come. Paste it. Then escape and colon small WQ. It is saved. Come back here. Now build the image using this command. After this command is complete, come back to the lab and then run this command. के बाद हमें इस कमांड को रन करना है एंड देखना है कि हेलो वर्ल्ड आ रहा है कि नहीं। एंड हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आ चुका है। सो वी विल मूव ऑन। We can find our Docker container ID using this command. Then come back here. Then we can also stop the container by running the following command. So copy this, paste it here. Remove this container ID part. Copy this container ID carefully. Paste it here and hit enter. अब इधर हमें वापस आना है एंड उसके बाद आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री रेपो क्रिएट करना है। So copy this, run it here, wait for it to complete. After this command is complete, हम लैब पे वापस आएंगे एंड रन करेंगे टू check the authentication.
So next, copy this command, run it, and then again copy this command and run it here. After this command is complete, हमें यहाँ वापस आना है and then we have to create a cluster. सबसे पहले हम अपना प्रोजेक्ट आईडी सेट करेंगे, so copy this, run it here, और प्रोजेक्ट आईडी की जगह पे बैकस्पेस करके हमें अपनी प्रोजेक्ट आईडी एंटर करनी है जो कि यहाँ पे है, so copy from here and paste it here, hit enter, एंड अभी अपडेट हो चुका है तो हमें यहाँ वापस आना है, देन इस कमांड को रन करना है जिससे हमारा क्लस्टर क्रिएट होगा। इसको बनने में 5 से 10 मिनट 15 मिनट भी लग सकते हैं, सो वेट पेशेंटली। मेक श्योर कि आपका स्क्रीन ऑफ ना हो या फिर आप AFK ना छोड़ दें उसे, क्योंकि हो सकता है क्लाउड शेल डिस्कनेक्ट हो जाए एंड इसके चलते आपकी पूरी लैब वेस्ट हो सकती है। सो बी दे, अगर कुछ कुछ देर में माउस हिलाते रहिए ताकि ये बंद ना हो, या फिर सेटिंग्स ही ऐसी कर दीजिए कि स्क्रीन ना बंद हो। ओके, नाउ जस्ट वेट पेशेंटली। Now after completing this command, come back here to check my progress. After it is completed, onto the task 4, you have to create your pod. So copy this, paste it in the notepad, replace this project ID with your actual project ID. Like this. Now copy this command and run it here. Next, come back here. And यहाँ पे आके आपको फिर से check my progress पे click करना है. It is completed. Onto the task 5, we have to allow the external traffic using this command. For the command explanations in this lab, every single thing is very well explained, so you can refer to that. Let's check my progress again. Now to the task 6, you have to scale up your service. So you will set the number of replicas for your node using this command. After this command is complete, come back here and click check my progress. And congratulations, the lab is complete. If this video was helpful, give it a like and subscribe our channel for more such videos. Now you can just simply end this lab.